हमारा बर्नर पूरा बन के तैयार हो चुका है। अब इसके पीछे की साइड में हैंडल लगाना होगा। तो हम नॉर्मल प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, पाइप का यूज कर सकते हैं या फिर लकड़ी का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रोफेशनल बनाना चाहता हूं, इसलिए 3D प्रिंटिंग का यूज करूंगा। अगर आपके पास 3D प्रिंटर नहीं है तो आप जेएलसी पीसीबी पे जा सकते हो। जेएलसी पीसीबी एक ऐसी कंपनी है जो आपके लिए पीसीबी, पीसीबीए और 3D प्रिंटिंग की सर्विस देती है, वो भी आसान, सस्ते और भरोसेमंद तरीके से। इस वेबसाइट पे 3D प्रिंटिंग पार्ट्स बनवाने के लिए हमें एचटीएल फाइल को अपलोड करना होगा, फिलामेंट को सिलेक्ट करना होगा, कलर सिलेक्ट करने के बाद में क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे और अपना ऑर्डर लगा देंगे। काफी आसान है। और यहाँ पर आप पीसीबी भी ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पर पीसीबी ऑर्डर करना ऑनलाइन शॉपिंग से भी आसान है। ये इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक मेकर्स की जिंदगी आसान बना देती है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट जल्दी और बढ़िया तरीके से बना सके। इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि आप अपने प्रोजेक्ट का हर स्टेप खुद देख सकते हो रियल टाइम में। यहाँ सिर्फ $2 के अंदर 1 से 8 लेयर की पीसीबी बनवा सकते हो। पूरा काम इन हाउस होता है, मतलब हर चीज पे इनका पूरा कंट्रोल रहता है ताकि क्वालिटी टॉप नॉच रहे। 24 घंटे के अंदर आपकी पीसीबी तैयार हो जाती है। और हाँ, अगर आप नए यूजर हो और मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाते हो तो आपके लिए एक शानदार सा ऑफर है। आपको मिलेगा $30 का कूपन, VIA इन पेड पर, कोई इंजीनियरिंग फीस नहीं। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ये वाला प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपके पैसे बचाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के अंदर मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं बोल नहीं पाया और मैंने डायरेक्टली बिना बोले आपको डायरेक्टली समझाने की कोशिश करी इसके अंदर। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगी तो कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाऊं या फिर उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करके चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।